Hello everyone, welcome to Bio World. Today in this lecture we'll start Gymnosperms. Gymnosperms. Here that gymno, that means naked, and sperma, that is seed. That is naked seed. Okay. So gymnosperms, they are non-flowering plants but seed producing. seed form होता है but seed कैसे होते हैं? naked होते हैं. Okay. So here in gymnosperms, that plant, here the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed. So seed are not covered but they are naked. सीड्स कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं. ओके, समझ में आया इतना? चलो नेक्स्ट. These gymnosperms, they found in colder region and where snowfall occurs. Right? Okay. Here that plants, they develop needle like leaves. Right? Okay. Most important, so they prevent loss of water. उसी के लिए they are having शंकन स्टोमेटा. स्टोमेटा अपर सरफेस पे नहीं होता है, स्टोमेटा थोड़ी अंदर की साइड पे होता है. सो दे आर हैविंग शंकन स्टोमेटा. शंकन स्टोमेटा क्यों होता है? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. राइट. एंड मेजोरिटी आप देख सकते हो कि जहाँ पे स्नोफॉल होता है इसीलिए उसका शेप ऐसा होता है, कॉर्न शेप का. दैट्स वाई दे आर नोन एज द कॉनिफर्स. राइट. ओके. Second, these plants are perennial, evergreen plants, right? And or they may be woody. अच्छा, कुछ प्लांट ऐसा उसमें जैसे ऑयल ऐसा सिक्रीट होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर कभी भी इंसेक्ट भी नहीं लगते. ठीक है. सेकंड, दैट पोलिनेशन अकर्स बाय विंड. एंड इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो पाइनस है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन. पाइनस क्या करता है? एयर पॉल्यूशन करता है. ओके. सो पाइनस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन. ओके. ओके. देन दे फॉर्म cones with reproductive structure. यहाँ पे cones दिखने मिलते हैं. Second thing, here two gametes are produced. But only in male gametophyte
but only one of them is functional. हम एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है. डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि वहाँ पे 2 मेल गमेट्स फॉर्म होते हैं और दोनों फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म्स, सो जिम्नोस्पर्म्स में 2 मेल गमेट फॉर्म होते हैं बट ओनली वन इज फंक्शनल. ठीक है. ओके, सेकंड थिंग, जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए बाद जाइगोट फॉर्म होता है जिसमें से एम्ब्रियो बनता है और दूसरा एंडोस्पर्म डेवलप होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे कि जो एंडोस्पर्म होता है वो 3N होता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म, ये क्वेश्चन खास पूछा जाता है बेटा, याद रखना. सो इन जिम्नोस्पर्म, in endosperm only mother is involved, so it is haploid. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एंडोस्पर्म कैसा होता है याद रखना, हैप्लॉइड होता है. कैसा होता है एंडोस्पर्म? हैप्लॉइड होता है. ओके, सो ध्यान रखना यहाँ पे एंडोस्पर्म्स कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है. ओके, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्लॉइड एंडोस्पर्म. ओके, so gymnosperms याद रखना, seed are not covered but seeds are naked. They possess sunken stomata. Okay, चलो नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ पे जब बात करें वास्कुलर सिस्टम तो वो प्रेजेंट होती है. सो वास्कुलर टिश्यू. अच्छा, वास्कुलर टिश्यू में याद रखो जो जाइलम होती है, जाइलम में क्या होती है? ओनली ट्रैकेट्स, नो वेसल्स. वेसल्स नहीं होते हैं. और फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम की बात करें सो फ्लोएम, उसमें नो कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स. सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं. Okay, now see some main characteristics. Just like when we talk about gymnosperms, so in gymnosperms coralloid roots are observed which looks like corals, right? So coralloid roots, they are roots having endosymbiotic association with blue-green algae like nostoc anabina. तो कोरोलॉइड रूट्स देखने मिलते हैं किसमें? याद रखना, साइकस में. ठीक है, चलो नेक्स्ट, माइकोराइजा. अच्छा, माइकोराइजा की बात करें सो माइकोराइजा इट इज symbiotic association
between fungi and higher plants, and it is observed in Pinus. So this is again most important. Okay, next, अगर आपको पूछे कि भाई सबसे टॉलेस्ट ट्री कौन सा है जिम्नोस्पर्म में, तो टॉलेस्ट ट्री की बात करें तो याद रखना सिक्वोया सिम्परवेरेंस। ये इतना बड़ा होता है कि उसके स्टेम में से आने जाने के लिए मतलब कार भी जा सकती है, इतना बड़ा स्टेम होता है। ओके, फिर ब्रांच्ड स्टेम किस में होता है? सो ब्रांच्ड स्टेम it is observed in branch stem is observed in Pinus and in Cedrus. चलो, अगर अनब्रांच्ड स्टेम पूछे, अनब्रांच्ड स्टेम तो वो देखने मिलता है साइकस एंड ज़ानिया में। अच्छा, अब अगर ऐसा पूछे कि भाई कौन सा प्लांट डायोसियस है एंड कौन सा मोनोसियस है। अच्छा, मोनोसियस मतलब समझ में आ रहा है कि जिसमें मेल एंड फीमेल कौन सेम ट्री पे है, तो उसको मोनोसियस बोलते हैं। जैसे मोनोसियस प्लांट हमने देखा है मेज, राइट। तो डायोसियस का एग्जाम्पल है साइकस और मोनोसियस का एग्जाम्पल है पाइनस। ओके, तो ये ध्यान में रखना। चलो, अब उसके क्लास देख लेते हैं। तो इसके 4 क्लास है। सो क्लास विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4 क्लास देख लेते हैं। सो सबसे पहले साइकेडोफाइटा, देन सेकंड गिंकोफाइटा, देन थर्ड पिनोफाइटा जिसको कॉनिफर्स बोलते हैं, and then Neet-Ncert-Gseb। तो चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो साइकेडोफाइटा है उसके एग्जाम्पल में है साइकेड्स, मतलब कि साइकस, राइट। अच्छा, साइकस के लिए याद रखना वो है लिविंग फॉसिल। क्या है? लिविंग फॉसिल। अच्छा, इसका दूसरा नाम एग्जाम्पल है जामिया पोंगमिया। अच्छा, जामिया पिग्मिया जो है वो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, याद रखना स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स। चलो, सेकंड गिंकोफाइटा। अच्छा, गिंकोफाइटा का एग्जाम्पल है गिंको बाइलोबा, एंड अगेन दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज लिविंग फॉसिल। ये खास पूछते हैं, ठीक है। चलो, देन पिनोफाइटा। पिनोफाइटा जिसके एग्जाम्पल है पाइन, फर, सेप्रस, सीडार,
एंड हमने अभी बोला रेडवुड, सिक्वोया, राइट, एंड नेटोफाइटा, जिसके एग्जाम्पल हैं निटोफाइट, राइट, जिसको हम निटेलेट्स बोलते हैं, राइट, निटेल्स इसमें आते हैं, इसके एग्जाम्पल में निटेल्स आते हैं, राइट। और ये एक ऐसे हैं जो है उनमें वेसल्स, बाकी किसी में वेसल्स नहीं होती, बट ये निटेल्स है उसमें वेसल्स देखने मिलते हैं, बाकी सब में वेसल्स नहीं होती है, राइट। तो ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट gymnosperms. It is common to find trees such as Pinus, cedrus and cycas growing in the cooler regions of India. All of them are gymnosperms. A group of plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed or naked before fertilization as well as post-fertilization when they develop into seeds. These seeds germinate to give rise to new plants. If you take a look at the morphology of gymnosperms, you will notice that most of them have tap roots. Moreover, in some genera, such as Pinus, the roots have a fungal association in the form of mycorrhiza, while in other genera, such as Cycas, small specialized roots called coralloid roots have an association with N2-fixing cyanobacteria. The stems of a gymnosperm can be branched or unbranched, and the leaves can be compound as in Cycas or simple as in Ginkgo. Moreover, these leaves are well adapted to withstand extreme climatic conditions as seen in balsam fir. Its needle-like leaves reduce the surface area, which in turn reduces loss of water due to transpiration. Even the thick cuticle and sunken stomata on the leaves reduce the rate of water loss. The reproductive structure of a gymnosperm is called a strobilus or a cone. And gymnosperms have both male and female strobili. Interestingly, the strobili may be borne on the same tree as seen in Pinus, or on different trees as seen in Cycas. The male strobilus has spirally arranged leaf-like structures called microsporophylls, which bear microsporangia, a structure that produces haploid microspores. A few microspores develop into male gametes called pollen grains, and the rest degenerate. Another name for male strobili is microsporangia. The female strobilus is a cluster of megasporophylls which bears ovules containing the megasporangium or nucellus. The megasporangium, surrounded by a layer of envelopes, produces haploid megaspores and a megaspore mother cell which looks distinctly different from the other megaspores. The megaspore mother cell undergoes meiosis to give rise to 4 haploid megaspores. One of these spores develops into a multicellular female gametophyte. The female gametophyte further bears 2 or 3 female sex organs called archegonia, which develop inside the ovule. The development of archegonia is followed by the fertilization process, during which pollen grains released from the microsporangium are carried by air currents and come in contact with the micropyle, an opening in the ovules.
A pollen tube sprouts from the pollen grain and grows towards the archegonium, where it discharges the male gametes. These gametes fuse with the egg to form a zygote. Post-fertilization, the zygote develops into an embryo and the ovule into a seed. Interestingly, gymnosperms were the first plants to have a seed habit. Today, gymnosperms are widely used to make products such as varnish and cosmetics. They also provide us with lumber that's used to make furniture. The term gymnosperm comes from the Greek words gymnos and sperma. Meaning of gymnos is naked and sperma means seed. So gymnosperms are called naked seed plant. They are a group of seed-producing plants. They have well-developed taproot system, stem, and leaf. Leaves of these plants vary in nature based on climate and environment. Gymnosperms undergo secondary thickening and as a result, stem's girth increases. Bark are formed due to it. They have two phases in life cycle. Mature plant are sporophytic phase and during reproduction, seed gets converted to gametes. This phase is called gametophytic phase. Most of the gymnosperms produce male and female cones. In such plants, reproduction takes place in same plant. There are gymnosperms which have either male or female cones. In such plants, male sperm are taken through air to female egg and reproduction take place. Let's discuss few uses of gymnosperms. Pine, rosewood, fir, cedrus are used in making furniture, pencil, and matchboxes. Timber, oils are produced from Pinus. Resins are used in the manufacturing of paints, ointments, and varnishes. Ephedrine, alkaloid, is obtained from ephedra plant which cures asthma. Neem plant is used in curing rheumatism. Rheumatism is a disease which causes pain and inflammation in tissues. Agathis plant has paper pulps which are used in making papers. Araucaria, also known as monkey's puzzle, are evergreen ornamental plant. You can find this plant in garden and at home.